different kind of enthusiasm I see on stage. Mrs. Ratan Kaur, Mrs. Aruna, Tara Gandhi ji. The other two men are talking as usual. They're not interested in what's happening. So you don't have to worry about them. Women are the ones most interested in Women's Day. So, but that's not the point. The point with it is. I have to add something. I'm sorry. Hey, go ahead. On the lighter note, I was sharing with Amanji on the way. If you want something to be said, ask a man. And if you want something to be done, ask women. Completely. No. You're 100%. Only problem that's happened is men say but don't do anything. And women don't say much but do everything. I come from a family which is all women. I mean, my wife and two daughters who always know when to keep things checked. So I can understand what you're saying. But the point here is, women have always done well when there is adversity. Women, that's okay. Anurag, men can talk. This is Women's Day. Women have always done well when there is adversity. If you look at any society where women have actually are more liberated today than before, our society went through adversity. Whether it's the Second World War, whether it's famines, whether it is problems, whether it's trouble, because women had to come to the forefront to take over a whole host of activities. It's not going to be the same now. So if we need women to do more, we need to ensure women are at the forefront of every activity that we always used to feel is not for women. Including things like driving buses, being policemen, being postmen, being at every cutting edge of society. Unless we can do that, we'll always be relegated to celebrating Women's Day as an event where we just celebrate, be happy, and then forget about it for the next 364 days. Reservation for women has been a big try. I was hoping both Dr. Sasi Tharoor and Sonal Mansingh would be here. And I'm not talking about just reservation for women in Parliament, but reservation for women in every job in the country, because it's there only where you can make a difference. I don't understand why we reserve for every category in the world, but we don't reserve for women. That's one of the few things you should all work for. I would ask Mrs. Ratan Kaur, Mrs. Aruna, all the women here to work for. It's not a political thing for me here. But if you look at it, wherever women have handled things, they handle it better than men. So I can only hope that on Women's Day here today, we all try and see what we can do to take this forward. Women's reservation is a time which has come of age. We should actually have it at all categories. But that's a different political message we can do. Right now, I just wanted to thank everybody for this wonderful event that you have held here. It's given me enough gifts which I don't think I can carry away with me because it's too heavy. But this is the nicest thing about what we are doing here. There are a lot of people working with women's groups, self-help groups in the lower level. Narmadeshwari is one of them, but there are many others working. But women's self-help group actually don't need help from people. They need help at a much higher level. They need help in marketing, they need help in taking their products across, they need help in design. That is the thing which is actually missing in women's self-help groups. ICCR has been supporting a lot of crafts. So here what I'm offering here today is that anybody who runs craft organizations, please let's get together to do an international event on craft, which is only craft for women. So if you can design something, craft for women has not become an international festival neither in India nor across the world where Indians participate. We participate in trade fairs, we participate in all kinds of cultural festivals, dance, music, art, theatre. But craft for women is something we don't participate in a big way. So if there are women entrepreneurs here looking to do a large event which is craft, so go to London Craft, New York Craft, Barcelona, the craft fairs all across the world. That's because the distinction between craft and art is an artificial distinction which we've done. You can draw something obscure and get paid $1 million for it, but to paint every day and get only 10 rupees or 20 rupees for that, that's a difference we've made. We need to work on that. So on this day, women entrepreneurs, all strength to you. Come to me if you want to do it. Thank you very much. Thank you so much, Dinesh ji. I would just like to say that was truly inspiring. Thank you so much, Dinesh ji, for sharing your thoughts with us. I would now like to invite respected Dr. Anurag Batra ji to please come forward and share your thoughts with all of us. Thank you. Good afternoon. First of all, it's an honor and privilege to be here.
Thank you, Mrs. Paul, for inviting me here. I think Mrs. Paul should get biggest award that anybody can get. She does all this without having a mobile phone, so I think we're going to launch an award for people who don't own mobile phones and carry one. But on a serious note, thank you for getting all of us together. Mrs. Tara Gandhi, you're so kind, and I remember you from our Gandhi Mandela event in July and 2019. You're so gracious. And I was just telling Mrs. Oswal that, when she got up, she picked up 2 candies and gave it to her health. So even while she was being helped, she was trying to look after the person. So that tells you a bit about the person. While she may be the Mrs. Tara, she is, but that's the person in her. So I noticed that. Just wanted to share that. Dr. Mrs. Aruna Abhay Oswal, good to see you again. We were together on Saturday. Mr. Dinesh Patnaik, I saw your profile. You have a very illustrious, education and career. I did that. After I got to know who you are, I only Googled it right now. I didn't. So clearly, you know what you were saying in terms of women entrepreneurs who are artisans or craft people, making a difference to their lives. Clearly, I think we know that art and crafts and things of art have much more value than what you see in them. Because really, without that, life is boring. Mr. Suresh Nanda, thank you for hosting us. Good to always see you. And I remember Mr. Nanda bought this hotel. I think I just started exchange to India, so it must be 19 or 20 years. I got 21. 20 years, yeah. I remember he invited me to the launch, and we were on the launch, and I was reminding him about the conversation I had with him 20 years back. So good to see you, and thank you for your home always. It's an honor and privilege to be here. I know, Women's Day is an important day, and we celebrate it. And it's good to celebrate. I was seeing some texts from friends saying, we should celebrate it in a token way. Once a year, we should do it more often, and it should happen by way of women getting more opportunities and ownership, men taking more responsibility what happens in homes, and genuinely respecting women. I just want to say that anything that you celebrate grows. So the more we celebrate women, it gives confidence to other women. Of course, we are in urban India, we are in Delhi, but when we talk of rural India, I think there's a lot to be done there in semi-urban areas. And I just want to say 3 things. One, today, awards like these, functions like these, make it aspirational for other women leaders, women professionals to aspire for it. And everyone likes recognition. There's no one, I haven't met anyone, whether you're the head of a country, you're a media owner, whoever you are, everyone likes recognition. A pat on the back for the right reason and from the right people is very valuable. Second, I just want to say that the last 12 months in terms of pandemic have been very tough for women. Not necessarily the women in this room, but from a, if you look at the data in the last 12 months, I'll just give you December 2020 data from US. The most job losses have happened for women. More than 90% of the women that, more than 90% of the people that got laid off in the US were women. So clearly women have, the corona pandemic has been liberator for a lot of women because they've turned homepreneurs. Working from home is now more acceptable, but also work has become boundaryless. And women do tend to look after their families more than men do. I hope it changes. And last point I want to make, all of us, men or women, do a lot of things from guilt. We have guilt about not being able to do enough for other people. I want to say that I want to recommend a book called The Gifts of Imperfection by Dr. Brené Brown. Dr. Brown is the world's #1 researcher on guilt, shame, vulnerability, and she talks about how imperfection is a gift. So I just want to say that we shouldn't worry about perfection while we strive for it. I think imperfection is a gift, and all of us human beings have a bit of it, and we should celebrate that. I just want to end by saying women sacrifice a lot. And the only one thing, when we were talking of holistic healing that day and holistic well-being, I think women compromise on their sleep a lot. I see it at my home, everywhere, whether it's my mother, my older sister, or my wife. I think if women just slept enough, they'd do better. So I just want to say that. I feel that sometimes they're
too busy chasing perfection, which is okay, but I think we can chase perfection, but whatever we achieve is good. So good luck to all the winners and keep doing what you do, it makes a difference. Thank you. Thank you so much, Anurag. Thank you for sharing your perspective. That was really profound. I would now like to invite Srimati Tara Gandhi Bhattacharya to please share your perspective and inspire all of us. You're truly an inspirational role model for all the women present. You can hear me? Yes, ma'am. Is there anyone who doesn't know Hindi here? सब हिंदी जानते हैं तो ठीक है। देखिए, मैं हिंदी में ही बोलूँगी और क्योंकि हिंदी मैंने अपनी माँ से सीखी थी और मातृ दिवस है आज। और मैं सबसे पहले अभिनंदन करती हूँ और मुबारक देती हूँ रतन जी को कि उनका जोश, उनके जोश पर नजर न लगे। और मेरे साथ इतने अच्छे व्यक्ति बैठे हुए, इतने सुंदर और इतने बुद्धिजीवी हैं और आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। एक मैंने और यहाँ अभी मेरे बेटे आए हुए हैं विनायक भट्टाचार्य जी, उन्होंने कहा मैं इस दिन के लिए रुका हूँ, इसलिए उन्होंने आज रात को जा रहे हैं वापस लग्जमबर्ग, वो इसी उत्सव के लिए आने वाले थे, रुक रहे। एक चीज मैंने पढ़ी कि द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ इट्स मदर। तो ये बात बहुत सच है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा हट के बोलूँगी कि विमेंस डे को हम, विमेन में इतनी शक्ति है कि हम आज पुरुषों को पढ़ाएं, क्योंकि बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड दोनों की एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम गर्ल चाइल्ड पे जोर देते हैं, बॉय चाइल्ड पे नहीं देते हैं। बॉय चाइल्ड को सिर्फ पैसा बनाने का साधन मानते हैं। ये हमारी माताओं का, हम सोसाइटी का, समाज का दोष है। एक लड़का पैदा होता है तो वो मेरी अंत्येष्टि करेगा, वो मेरा नाम रखेगा, लेकिन और तुम पैसा बनाएगा। अगर पैसा बनाना है तो गाली दे, गलौज दे, जो भी करे वो चले। तो मुझे लगता है विमेंस डे पर मैं हमेशा पुरुषों का सोचती हूँ। और हम इतने, नारी बेशक निरक्षर हो लेकिन वह अशिक्षित नहीं है, वो शिक्षित है। देखिए, क्योंकि गांधी की बात के बिना रहा नहीं जाता है। गांधी उतने महान नहीं होते, उस महात्मा की उसमें शायद पहुंचने में उनको बहुत दिक्कत होती है अगर कस्तूरबा का साथ नहीं होता। और उन्होंने हमेशा उनके साथ तर्क किया, उनका विरोध किया। फिर उनको लगा कि जब ये सही है, तब उन्होंने गांधी की दार्शनिकता को अपनाया ही नहीं, गांधी की फिलॉसफी को उन्होंने गांधी से ज्यादा समझा, गांधी के आगे चले। गांधी तो राष्ट्रपिता बने, उसके बहुत पहले कस्तूरबा राष्ट्र की माँ बन गई थी। लेकिन गांधी ने एक कहा कि सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति है मातृशक्ति। तो हम जो बहनें हैं, हम जो नारी हैं, हमें अपने को तो हम दाद देते हैं, हमारे साथ भाइयों ने किया। यह प्रथम देश है दुनिया का जहां नारी के उत्थान के लिए पुरुषों ने काम किया। और सब देशों में नारियां ही झंडा लेके जाती हैं, लेकिन हमारे देश में पुरुषों ने भी किया। बहुत बुरी बुरी चीजें देखते हैं, पुरुषों की गैंग रेप हो रहा है, ये कर रहे हैं, औरतों के साथ पीड़ित कर रहे हैं। और जैसा कि अभी भाई ने कहा, वो कभी कितना 10 रुपया कमाती हैं, उनके काम पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन लड़के को सही शिक्षा नहीं मिलती, करुणा का उदाहरण नहीं मिलता, क्षमा का नहीं मिलता। आज जितने टेररिस्ट हैं उनका भयंकर बचपन आ गया है, तभी वो हुए। इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है कि पुरुषों को, लड़कों को करुणा का उदाहरण दे, नहीं तो हमारा भविष्य नहीं होगा सुरक्षित। तो आज के दिन मैं तो व्यक्तिगत स्तर पर मैं बेटी की भी माँ हूँ, बेटे की भी माँ हूँ और आप सबकी बहन हूँ। मैं यही कहती हूँ कि आज महिलाओं में इतनी ताकत है कि अपनी पीठ थपथपाने के बदले हम लड़कों को सही रास्ता दिखाएं।
भविष्य में नारी के हित में लड़कों की शिक्षा। और मैं ये भी कहूँगी कि हम यह न भूल जाए कि पुरुष और नारी एक तरफ है, हम क्या है जिंदगी में, हमें क्या पता दूसरे पशु पक्षी क्या बोलते हैं। तो हमारी छोटा सा हमारा सीमित बुद्धि है, उसमें हम सबको एक साथ समझे और बॉय चाइल्ड पर बहुत ही अच्छा ध्यान देना चाहिए। मैंने दलाई लामा से एक बार कहा था कि लड़कों को क्या योर होलीनेस डू वी हैव टू गिव कंपैशन टू बॉयज, एंड दलाई लामा सेड यस, कंपैशन but also a sense of responsibility because they are going to be the future citizens of the world. तो मैं आज एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में, देश की बहुत वयोवृद्ध नागरिक के रूप में भाइयों बहनों लड़के लड़कियों सबका कल्याण चाहती हूँ। यह सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं। धन्यवाद। Thank you so much, Tara ji. That was very heartwarming, and I'm sure it resonated with everyone here. I would now like to invite Dr. Aruna Oswalji to please share her perspective with all of us. Thank you so much. Yes, अभी टुडे इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, हम सबको मालूम है, और आज ही है 8 मार्च जिसको कि हम इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे अरुणा ओसवाल ट्रस्ट को भी रतन जी के साथ जुड़ने का एक मौका मिला। मुझे कितने सालों से हम इकट्ठे जुड़े हैं और लगता है कि ये हमारा जो साथ है हमेशा होना चाहिए, रहना चाहिए। रतन जी, आई रियली वांट कि हमारी जो फ्रेंडशिप है, एक हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, एक जो बॉन्ड है, वो हमारा हमेशा साथ में चलना चाहिए। आज लमदेश्वरी ने जो साथ में हमें सपोर्ट किया, और मैं तो कल भी राज जी को मिली थी, वहाँ पे फुलमैन में हमारा प्रोग्राम था, अच्छा लगा। अभी मैन इज टॉकिंग अबाउट वुमेन टुडे, जैसे कि आज बहुत अवार्ड्स भी आए हुए हैं, और मैं भी आई वॉज इन ए प्रोग्राम ऑफ आमरा फाउंडेशन, तो उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। शी स्पीक्स एंड एवरी वुमेन हैज ए स्टोरी। मुझे लगता है जितनी हम महिलाएं बैठी हैं सबकी कहीं ना कहीं कहानी है। वो कहानी ऐसी है कि उनको कैसे आगे आने का मौका मिला और उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा उस कहानी के लिए। तो मेरी भी बहुत स्टोरीज हैं, ये नहीं कि हम लोग डायस पे बैठे हमारी कोई स्टोरी नहीं है। तारा गांधी जी को तो इतना एक्सपीरियंस है, उनसे तो हमने बहुत हमेशा सीखा। लाइक आई विल नॉट से हर मदर, लाइक ए गॉड मदर, वी हैव लर्न फ्रॉम हर। यस, प्लीज क्लैप फॉर हर। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी बहुत सीखने का मौका मिलता है जब हम बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, मिलते हैं। वुमेन्स डे पे मैं बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ। स्टोरी की हम जब बात करते हैं, उससे पहले मैं रतन जी के लिए 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। रतन जी, मैं बहुत दिनों से, मुझे याद है इस प्रोग्राम को करने के लिए, देन आई मेट रतन जी, बिकॉज हम काफी सालों से इकट्ठे मिलकर प्रोग्राम करना चाह रहे थे कि लेट अस डू इट टुगेदर विद ऑन दिस फोरम्स। एक हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिला, अरुणा ओसवाल ट्रस्ट को भी रतन जी के साथ जुड़ने का, और रतन जी को हमारे साथ जुड़ने का मौका मिला। तो हम मिले तो बहुत कंफ्यूज थे हम दोनों ही। फर्स्ट टाइम मैं भी घर से बाहर निकली, 11-12 महीने के बाद हमने मीटिंग करी। मैं भी 11-12 महीने हम घर से बाहर ही नहीं निकले, हम लोग इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव किया अपने आप को। तो हम सोच रहे थे कैसे करेंगे प्रोग्राम, पर रतन जी का जोश है और इनका जो जोश के अंदर होश है, दोनों चीजें, उन्होंने मुझे भी बिल्कुल ज्यादा जोशीला बना दिया और हम दोनों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया। हम जब मीटिंग करके उठे तो मैंने बोला रतन जी प्रोग्राम तो होगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। और रियली थैंक्स टू रतन जी एंड ऑल द टीम, और जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया इस प्रोग्राम को, वंडरफुल। मुझे अच्छा लगा कि रतन जी का एक सपना, हमारा भी सपना कि हम अच्छे लोगों के साथ जुड़े और फिर एक अच्छा प्रोग्राम हम कर पाए। और अच्छा लग रहा है आज बहुत महिलाएं जो कि ऑलरेडी इम्पावर्ड है, उनको अवार्ड भी मिलेंगे। कई ऐसी हैं जो कि आज सुनेंगी, मे बी दे विल आल्सो गेट एम्पावर्ड, दे विल गेट इंस्पिरेशन टुडे कि हम भी कुछ करें। क्योंकि मैं हमेशा समझती हूँ हर वुमेन के अंदर एक यूनिक क्वालिटी है। यू नो, भगवान ने जब वुमेन को बनाया, औरत को बनाया, तो उसने कुछ यूनिकनेस दिया है, एक स्पेशल मॉडल के रूप में तैयार किया है। क्योंकि उसने सोचा कि ह्यूमैनिटी को आगे लेके कौन चलेगा, जनरेशन को आगे लेके कौन चल सकता है, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन ही लेके चल सकती है। 9 महीना बच्चे को पेट में रखना, उसके बाद इतनी पेन के साथ उसको बाहर निकालना, फिर उसको जन्म देने के बाद
उसको पालना पोसना और उसको दुनिया में पूरा दिखाना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कि हाउ टू फेस द वर्ल्ड। तो वो जो चीजें हैं, महिला तो स्ट्रॉन्ग थी, है, हमेशा रहेगी, जो मैं समझ सकती हूँ। और मैं रतन जी के लिए बोलना चाहती हूँ कि रतन जी, मैं आपको 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। ना जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, सिर्फ आपके लिए। ना जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। So I would like to maintain this relation with Ratan ji forever because ये जो एक वुमेन एम्पावरमेंट की हम जब बात करते हैं, जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि अभी वहाँ पे हम लोग वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट सुनीता जी भी आई हुई थी, सोलंकी साहब भी बोल कर गए, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला वुमेन के बारे में कि उनको कोई जरूरत नहीं है। मुझे याद है मैथिली शरण गुप्त की हम लाइनें जब याद करते हैं कि नारी अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूर आंखों में पानी। नारी तो वही है, पुराने जमाने से भी, गोल्डन टाइम से नारी वही थी। हम जब भी गॉडेस के नाम लेते हैं तो पहले गॉडेस का नाम आता है, फिर राधा कृष्ण, सीताराम, यू टॉक अबाउट एनी सरस्वती गॉड, लक्ष्मी, मतलब इतना गॉडेस को हम लोगों ने पूजा है, अब तक पूछते हैं, उसमें पूरी जनरेशन पूछते हैं, बच्चे भी, हमारे मैन भी और हम लोग भी। तो इनको तो हमेशा पूजा गया नारी को एक शक्ति के रूप में, लेकिन उस शक्ति को बाहर निकालने के लिए कोई चाहिए, परिवार का कोई, या तो आपका हस्बैंड होगा, पति, जो कि निकालेगा उसकी शक्ति को बाहर, या आपके परिवार में आपके इन-लॉज होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, जिन्होंने आपको इतना शक्तिवान बनाया। मेरी स्टोरी ये है, मैं अपनी छोटी सी कहानी शेयर करूंगा आपसे। इवन आई हैव स्टोरी, अगर मैं आज आपके सामने यहाँ पे खड़ी हूँ इस रूप में, एक अभी हॉस्टल ग्रुप को मैं हैंडल कर रही हूँ आफ्टर अवेजी लेफ्ट मी 5 years बैक, ऑल ऑफ अ सडन, तो मुझे वो ग्रुप भी संभालना पड़ा, जबकि मैं ग्रुप के लिए नहीं बनी थी, पर उन्होंने मुझे 45 years जो मुझे सोशल फैक्ट्री संभाली 45 साल तक शादी के बाद, सोशल फैक्ट्री में दुनिया तक सेवा करने के लिए, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पूरी दुनिया में मुझे एक्सपोजर दिया, मुझे घुमाया, कॉन्फिडेंस दिया, वो कॉन्फिडेंस मेरे अब काम आया टू हैंडल सभी हॉस्टल ग्रुप। तो एक पति ने अपनी पत्नी को आगे किया, हमेशा मेरे पीछे ऐसे सपोर्ट किया कि तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो एवरीबडी सेज आफ्टर एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन, बट आई ऑलवेज से आफ्टर माय सक्सेस देयर इज ओनली वन मैन हु इज मिस्टर अभियोसा, जिन्होंने आज मुझे इतना बड़े मुकाम पे, पर इंटरनेशनली वी आर लीडिंग अवर ट्रस्ट इज डूइंग लॉट ऑफ वर्क। आई एम अटैच्ड विद लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन, हमारे 1.4 मिलियन मेंबर्स हैं और हमारे 200 कंट्रीज में हम लोग फैले हुए हैं, एंड पूरे इंटरनेशनली हमारा एक क्लेम होता है। हमने सारे प्रोजेक्ट, जितने हमारे ट्रस्ट के प्रोजेक्ट हैं, अगर मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हॉस्पिटल्स की बात करूँ, हंगर की बात करूँ, या मैं चाइल्डहुड कैंसर की बात करूँ, मेमोग्राफी मशीन्स, डायलिसिस मशीन्स, मोबाइल मेडिकल वैन्स, अरुणा गोस्वामी ट्रस्ट जो अभय जी बनाया था, अभय जी ने 2000 में, वो मैंने तब से उनके लेगेसी को आगे लेके चलने का एक मौका मिला। वुमेन डे के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि वुमेन में 5 स्पेलिंग होते हैं, हम सब जानते हैं, WOMAN, we call ourselves women, and man only 3 spelling. Who is empowered? Women. तो कहने की जरूरत नहीं है। वुमेन में अगर मैं W के लूँ, व्हील ऑफ फैमिली, M को लिया जाए मिरर ऑफ चिल्ड्रन, A को लूँ तो एड्रेस ऑफ लव, N को लूँ तो नेविगेटर ऑफ लाइफ हो। और मैं रियली चीयर्स करूंगी ऑल द स्ट्रॉन्ग वुमेन सिटिंग हियर कि यू आर कंपैशनेट, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर यूनिक, पावरफुल, एम्बिशियस, यू ऑल आर वुमेन, स्ट्रॉन्ग वुमेन हु आर लीडिंग द वर्ल्ड। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आदमियों के बिना हम अधूरे हैं, जब तक हमारे साथ मैन फॉर्स नहीं जुड़ेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं हमेशा अपनी स्पीच में हमेशा ये कहती हूँ कि कभी ईगो नहीं आना चाहिए। आप कभी मत सोचो कि आप बहुत ऊंचे हो गए हो। अगर आपके साथ आदमी है, आपके कलीग्स हैं, आपके साथ ऑफिस में भी, आपके घर में भी, आपके परिवार में भी, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्त्री पुरुष के पीछे हो तो कमजोर नहीं, सम्मान करती है। स्त्री पुरुष के पीछे हो तो कमजोर नहीं, सम्मान करती है। स्त्री पुरुष के आगे हो तो अहंकारी नहीं, ढाल बनती है। स्त्री अगर पुरुष के बराबर हो, स्त्री अगर पुरुष के बराबर हो तो हर कदम पर साथ निभाती है। सो वी नीड टू गो हैंड इन हैंड विद मैन अगर हमको आगे बढ़ना है। आई वुड अगेन लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल द वुमेन अचीवर्स हु आर गेटिंग अवार्ड टुडे। आज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट एक अवार्ड मुझे बहुत किया हुआ है, जिसको कि मैंने रतन जी को रिकमेंड किया, रतन जी ने इमीडिएटली एग्री भी किया। मैं उनकी 2 लाइनें में बात करना चाहूंगी। कृष्णा लांबा के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। शी इज हियर एंड मैंने उनकी स्ट्रगल को 5 साल में देखा है, कृष्णा की स्ट्रगल को।
मधुरी जी लांबा मेरी CEO है हमारे ट्रस्ट के, एंड उनकी डॉटर है। शी मेट विद एन एक्सीडेंट इन गोवा एंड शी इज ऑन व्हील्स नाउ, बट हाउ शी स्ट्रगल्ड टू कम अप टू दिस लेवल इन 5 years. This is called a strong woman who is sitting there. कृष्णा लांबा, रियली सीखने को मिलता है। हम लोग भी इतने अच्छे हैं, अपने पैरों पे खड़े, हमें इतनी कंफर्ट है, सब कुछ है, हम लोग फिर भी कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला, हम लोग फिर भी सोचते रहते हैं। लेकिन सी द स्ट्रगल ऑफ वुमेन, कई वुमेन ऐसी हैं जिनको मैं देख रही हूँ जो कि स्ट्रगल कर करके ऊपर आई हैं। तो उन सबको मेरा अभिनंदन, बहुत नमस्कार। ज्यादा नहीं बोलूंगी, अंत में इतने कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि वुमेन को क्या करना है, आपको क्या क्या करना है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ कर लिया है। आप अबला नहीं हो, सबला हो। आपके आंचल में दूध है, लेकिन वो प्यार का है, कुछ काम करने का है, एक जुनून है, प्यार है बहुत आपके अंदर। और आंखों में जो पानी है ना, वो आंसू नहीं है रोने वाले, वो क्राइम वाले नहीं है, वो आंसू है पैशन, कंपैशनेट की बात कर रहे थे, कंपैशन पैशन के वो आंसू है। तो ऑल यू हैव कंपैशन एंड पैशन। अंत में आई लीव यू विद ए वेरी ब्यूटीफुल लाइंस, पेजेस ऑफ यस्टरडे कैनॉट बी रिवाइज्ड, पेजेस ऑफ यस्टरडे कैनॉट बी रिवाइज्ड, बट पेजेस ऑफ टुडे and tomorrow are blank. So hold a pen and make it an inspiring story. You all have a story. So hold a pen and make it an inspiring story. Remember, today's beautiful story becomes history tomorrow. And we need, all of you have to create history today and tomorrow. Thank you very much again. Wishing you all a happy Women's Day, and thank you to Ratan and Literacy Forum for giving Aruna Goswal Trust and me also to be here. And thank you Ratan for all your thoughts, all your prayers, and everything is going on so well. I am so happy. वो बात कर रहे थे अभी के, जब भी लेडीज मिलती है तो बहुत बात करती हैं, पर आज मैं देख रही थी कि लेडीज चुप थी, वो 2 मैन बात कर रहे थे इसको के, क्योंकि उनको आज मौका मिला, वुमेन्स डे है, तो दे हैव गॉट द राइट टू टॉक टुडे, दे कैन टॉक टुडे बिकॉज़ दे हैव गॉट द राइट टुडे, दे कैन टॉक एनी टाइम। बट मुझे अच्छा लगा आज हमारी बहनें चुप हैं और हमारे भाई लोग बात कर रहे हैं, हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर अप्रिशिएटिंग अस, एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। Thank you so much, Aruna ji. I would like to introduce Dharmadeshwari to all of you now. And before I begin, first of all, I would like to thank Mr. Ratan Kaur and Dr. Aruna Oswal ji for providing all of us with such a powerful platform to celebrate womanhood. I would one round of applause for both of them, please. They're really outstanding. So, Narmadeshwari is a social enterprise which aims to empower the more socio-economic backward communities and women of Asia through the vertical of textile. It is a direct manifestation of Confederation of Empowerment Initiatives, also known as CEI. CEI is an international development agency relentlessly working to achieve all the UN Sustainable Development Goals, including the elimination of poverty, food security, clean water, gender equality, agriculture and allied activities. CEI's award-winning and unique resiliency solutions have been implemented to solve complex challenges across geographies, populations, economic sectors. And we are helping currently approximately around 2.5 crore people at the grassroots level all across India. CEI is the international business mentor to British Water for Asia, and recently successfully convened the Ministry of Jal Shakti and British Water to establish the first agreement towards bilateral talks in relation to the water and sanitation sector. This agreement will have a huge impact on the trading relationship of India and UK, and the combined efforts to clean the river basins of India will directly impact the lives of 50 million people. We have also collaborated with Asian Vision Institute to implement our unique resiliency solutions for rural development in Cambodia. And we are expanding our relationship with all the nations of the Mekong region rapidly. Now, vulnerable women
are the main beneficiaries of all the solutions being implemented by us at the grassroots level in Southeast Asia. During COVID, we distributed food and medical aid kits to over 10,000 tribal people belonging to the most vulnerable communities in Raigad, Maharashtra. And most of the beneficiaries were women, old ladies, young children, because most of the men in these areas are migrant laborers and they were stuck elsewhere during the pandemic. So, and the region was also hit by Cyclone Nisarg, which destroyed many homes in the region. And we helped rebuild many houses, and we are still working for the holistic development of the entire region. Most people in these areas do not have ration cards or access to government documents due to lack of education. So although we've set up many camps to help them get all these documents, make their ration cards, make their bank accounts, but even then, there are thousands of people who fall outside the ambit of government protection. So we are looking after these people. We've been instructed by the government of Maharashtra and we've been instructed by the local district administration to look after these communities, to look after the Khatkari community, because even the government can't reach them at this point. They live in such interior areas of Maharashtra that it is very hard to reach them, and because we have tribal women who we've developed them into leaders, so they are being able to help us implement our initiatives in Raigad. We have collaborated with many organizations such as Glenmark, United Way and Road Track for our initiatives, and we are constantly expanding this. When you work on the grassroots level, and I'm very fortunate to have had this opportunity, especially in the past year, to work on the grassroots level. You gain a lot of profound insights and you learn valuable lessons. And one major thing that I have learned is that even amongst the most vulnerable, even amongst people who are suffering so much, the one person suffering the most is always a new mother. As at this point, she doesn't really know that whether she will be able to provide for her newborn. Only 9.6% of children between the ages of 6 to 23 months in the country receive an adequate diet. Now, in light of this, we ensure that we provide nutritious food to children and take care of young girls through our Save a Girl Child campaign that has been implemented everywhere. Another lesson that you learn is that their normal is completely different from our normal. Our perception of reality is completely different from their understanding of the world. So in our medical camp, we come across many stories. During this year, we come across many stories. Our tribal sister, Seema Ji, who is only 17 years old, came to us because she suffered many injuries due to sexual assault. And as a legal professional, I manage many pro bono cases. And we asked her, will you, lodge a complaint? And she said no, because this is normal. Everyone around her said no, we will not be lodging complaints, because all our women, all our girls go through this at some point. Similarly, another tribal sister of ours, Reena Ji, did not know that she's pregnant. She was 5 months pregnant. Because gynecological problems and irregular menstruation cycles are so common that she didn't even know that there was something wrong with her or that she was pregnant. So in our medical camps, we realize, we come across many heartbreaking stories. So it is a responsibility of the empowered society, people like us, to use our empowerment and bring them out of this normal, change their normal. And it is also very important to realize that all these women are full of talent. They have many skill sets, be it in the field of, they know how to make medicine out of leaves. Even when it comes to textiles, and as Dinesh Ji was saying and Anurag Ji was saying, when it comes to crafts, they are very talented. They just do not have a platform to harness these skills. So, what happens is that Narmadeshwari is a platform that where we are trying to give them a platform where they can create, they can use their existing skill sets, we develop their skills further, provide them with training, and give them a platform to create. And besides also creating our distribution franchise model gives them a platform to sell.
We have tied up with the National Bank of Agriculture and Rural Development, and many other government schemes will help us give them an initial investment. The government will help them get initial investments, and we will give them high-range products at a very low cost, so they can all become entrepreneurs, even vulnerable women in cities. So, on this note, I would like to start the Narmadeshwari Power Walk, and I would really I would like to start the Narmadeshwari Power Walk, and I would like to invite Avantika Makin Kanwarji. She is an absolute powerhouse. She is the granddaughter of former President Honorable Shankar Dayal Sharma ji and daughter of Shahid Lalit and Gitanjali Makin ji, who were the sitting members of Parliament when they were both assassinated. Avantika's life has been shot into a documentary by Amir Khan, and she produces music videos and films in Punjab and Haryana. A big round of applause for Avantika ji, who is wearing a UK Narmadeshwari sari with fine dowry handcrafted and then decorated by embellishments of ari and stone. This sari is made by self-help groups from Madhya Pradesh near a village in Dewas. I would next like to invite Sanchita Chavi Rawal ji. She has led an illustrious career over almost 3 decades in the corporate world and has launched many international and domestic brands under the aegis of Apollo Hospitals, Star TV, Hindustan Times. Sanchita ji is wearing a rose pink Neemzari Jambar Narmadeshwari sari crafted by hand by the weavers of Mirzapur, and this sari takes almost 2-3 months to be made on the handloom. Next, I would like to call Shahana Mukherjee, who is wearing a lotus administered Narmadeshwari sari. She is a very active volunteer for the Aam Aadmi Party and has been helping old citizens throughout the COVID pandemic. I would now like to call Renu Hussain ji. Now we would like to invite our awardees on stage to please share their perspective and their journeys of empowering women and empowering themselves. I would first like to invite fashion designer Anjali Kapoor to please come on stage and share her views with all of us. तो है ना अगर मैं आ गया तो कैसे हो जाएगी Good afternoon, everybody. On the Good afternoon, everybody. It's just great to be here, and it's a fantastic platform on a Women's Day. And feel so proud to be doing something of your own and making a brand for yourself. So last 25 years, we've been working on the brand and of Anjali and Arjun Kapoor. I handle and I creatively, design clothes and specialize in bridal stuff, and I love to dress up all my brides. And over the years, there's a certain essence that you have to follow. Our particular brand follows the Victorian Renaissance, and that's how I've managed to kind of create a look for my brides. And it feels really nice when you are considered one of the brands in the country where every bride, an aspiring bride, would want to come to you and dress themselves. And lovely being here, so look forward to a great evening together. Thank you so much, Anjali ji. That was really, really beautiful. I would now like to invite Jyotika Janayaki, who is a fashion entrepreneur. She is truly inspirational, and she has been empowering women through her initiatives vehemently for the past so many years. A
big round of applause for Jyotika Chalani. I'll make this really short because I've already been on the stage before. Thank you very much, Riyadh. This is a great initiative and it's really, really a privilege to be up here. I'd just like to add something. I think I'll just wait till makes his presence felt. What timing? I can't be speaking parallelly. We were waiting for you to come so I could speak. So just a little bit to add to my earlier speech, I think Janvi India has a mission to become the world's most loved cashmere brand in the world. So I don't think becoming the best or becoming the most, I would say, numbers don't mean anything to me. But love, of course, as I had said earlier on, is very important. I just love the fact that we're at a Women's Day Women's Day award, and we've got Mr. Tharoor out here making a lovely speech parallelly. We'd love for you to speak to us. So just finishing off with what I had to say. Yeah, maybe I should give him his, and that would maybe ask him to maybe calm down a little bit. Shashi, I'm going to give you a love shawl that we've made. There's a special one for you, which is a houndstooth. I don't know whether, because you're a little late in the day, on stage, to stand out a little more and match it with your lovely outfit. So our brand is all about love and about spreading love, and that's what I would like to do. Yeah. And I've been with you, and I work with the World Bank. So that's a bit of a drama guy, and that's love. Excuse me. Excuse me. Is it? Yeah. I was just told Sashi that you're the correct brand ambassador. And I said, is he? Okay, so basically.